हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिर से एक बार लीड कोड का प्रॉब्लम लेके आ गए हैं। एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1672। आप लीड कोड पे जाके देख सकते हो। एंड ये प्रॉब्लम है कि रिचेस काउंटर वेल्थ फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे दिया ऐसा गया है कि यहाँ पे 2D एरे दिया है। एंड इसमें से जो भी एरे का जो सम है, यानी कि दिस इज वन पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन, एंड ये जो तीन है इसके अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स। तो इसमें जिसका सम सबसे ज्यादा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। जैसे कि यहाँ पे इसका सम, इस पर्सन का सम जो होगा 3 + 2 + 1 इज 6, एंड 3 + 2 + 1 6। सो दोनों का भी 6 ही आंसर आएगा। ओके। एंड सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे जो है 6, इसका 6 है, इसका 10 है, एंड इसका 8 है। सो इट शुड डिस्प्ले 10। यस, ग्रेटर। जो भी ग्रेटर रिचेस्ट वेल्थ है जिसकी भी, वो डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, लेट अस डू इट। सबसे पहले आप लीड कोड पे ही करिए जितना होगा उतना। अ, मैं फिलहाल तो यही प्रेफर करता हूँ। ओके, जस्ट कॉपी दिस स्टैटिक इंट मैक्सिमम वेल्थ। ओके, फिर सबसे पहले हम इंट आंसर इक्वल टू, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, हम ये आंसर क्यों ले रहे हैं वो। इंटीजर डॉट, इट विल टेक मिनिमम वैल्यू। मतलब जितना भी जावा प्रोवाइड करता है मिनिमम वैल्यू, वो ये बाय डिफॉल्ट लेगा इसकी सहायता से। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ओके, अभी फॉर लूप चलाएंगे। बस तो पर्सन है, पर्सन पर्सन इज लेस देन अकाउंट्स, जो एरे नेम है अकाउंट्स, ए डबल सी ओ यू एन टी एस, अकाउंट्स डॉट लेंथ। जितनी इसकी लेंथ है उतना ये फॉर लूप चलना चाहिए। एंड पर्सन प्लस 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 प्लस। ओके, विल इटरेट to, can we do this? Okay, iterator. Okay, now it's fine. For int, let us take account equals to 0, count less than, just जितना भी रो चलेगा उसकी लेंथ। लो रो की लेंथ लेने के लिए पर्सन counts of person dot length, it will give the length of the row, a particular row. Okay, simply for person dot length semicolon and count a double c unit account plus plus. It will iterate up to the length of the row. Okay. Now let us take here some value which should be here 0, and it will check every row. So sum should be into the accounts of person. Every element should add into the sum, and it will give the sum of the row, which is one person, all the accounts sum, person, and simply. Okay, now we have sum, it will take okay, now we have sum of one row, right? Then immediately it check it should check that the sum is greater than answer. If yes, then answer is equals to sum, and at the end just return the answer. Okay. Okay, let's take here array, 2D array.
Now 12. Okay, let's check what's here. Okay, simply we will take this one. 1 2 3 3 2 1. Okay. 1 2 3 3 and 2 3 2 1. Okay, semicolon here. Let's check system dot out println. Okay, function name, method name, whatever. Maximum wealth of uh, for array name counts. Okay, it should print 6. Let us check. Okay, I think everything is correct. Let's check. Yes, it is giving 6. Okay, let's check another array, that is 1573 1573 third row, which is 35. 35. Okay, should give 10. Okay, our program is successfully running. You can just simply write it down to the lead code, and it will give you the same successfully run. Okay, I will explain it to you. सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम लेंथ लिया है। इसमें इसमें 2D एरे पास किया है, जो कि ये 2D एरे जाएगा इसमें। तो फिर यहाँ पे जो इंटीजर मिनिमम वैल्यू है, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू जावा जो प्रोवाइड करता है वो कि माइनस में होते हैं, वो एज आंसर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की है, क्योंकि ये आगे हमें यहाँ पर काम आने वाली है इसलिए। सो पहला फॉर लूप आइटरेट किया इधर, जो कि फर्स्ट रो है, जैसे कि ये एक पर्सन है, एज आई सेड बिफोर, ये एक पर्सन है, ये दो, इसमें दो अकाउंट है इसके, एंड दिस इज द वेल्थ। इसकी वेल्थ, फर्स्ट अकाउंट की वेल्थ 1 है, सेकंड अकाउंट की 5 है। ऐसे ही ये सेकंड पर्सन की वेल्थ थर्ड पर्सन की, और जिसका सम मैक्सिमम सम होगा वो डिस्प्ले करना है, जैसे कि यहाँ पर एक 10 का है, सो इसलिए यहाँ पे 10 डिस्प्ले हुआ। ओके, फिर जो पहला ये रो के लिए, फिर यहाँ पे इन सम इक्वल टू 0 लिया है, जो कि मिनिमम हम कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे जाके वो यहाँ पे ऐड ही होने वाला है, इसलिए यहाँ पे 0 लिया है। फिर फॉर ये चलाया रो के लिए, दिस दिस इज फॉर कॉलम एंड दिस फॉर रो। ये पूरा एक रो आइटरेट करेगा, एंड जो रो की सम है वो जो सम में ऐड होती जाएगी, जैसे कि जैसे पहला एलिमेंट जाएगा यहाँ पे 1, फिर ये ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा, सो इसकी सम आ जाएगी 6। फिर यहाँ पर ये चेक करेगा कि 6 इज ग्रेटर देन आंसर, जो कि मिनिमम वैल्यू। यस, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पर माइनस में कुछ तो वैल्यू आएंगी, इसलिए यहाँ पे एज ए आंसर क्या असाइन होगा इधर, 6 असाइन हो गया। फिर और एक बार आइटरेट होगा 7 and 3, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन आंसर 6 था, तो ये इसको असाइन हो जाएगा 10। फिर 5 and 3 ऐड हो जाएगा, इसका 8 आएगा। 10 इज ग्रेटर देन 8, यस, बट 8 छोटा पड़ गया, इसलिए 10 ही एज इट इज रहेगा, एंड एट द एंड रिटर्न करेगा 10। सो यही था हमारा आज का प्रोग्राम, प्रोग्राम सॉरी प्रॉब्लम। एज इट इज आप कॉपी करिए, लीड कोड पे चले गए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।